Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. As you all know that we are doing a story, and till now the story is that as Hamlet now has come to know that Claudius had murdered his father, and now he is determined to take revenge. अब बस वो बदला लेना चाहता है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचता. So, uh, the other thing is that now, but there's one thing that is always going on at the back of his mind, that maybe the ghost story is not true. ऐसा हो सकता है कि ghost की जो story है वो ठीक नहीं है. So he just wanted to make it sure before he goes for revenge. वो इस बात का पहले यकीन करना चाहता है. वो ये चाहता है कि पहले उसको इस बात का यकीन हो जाए, उसके बाद ही वो रिवेंज की तरफ जाएगा. मीरा बेजाज बेटे, लास्ट 5 मिनट्स में मैं आपको क्वेश्चंस के लिए आप हैंड रेज कीजिएगा, अभी नहीं करें. ऑल राइट. सो what he made a plan, and the plan was that he asked a group of actors to perform a play in front of king and queen, to perform a drama in front of king and queen, and the drama was the murder of Gonzago. He chose this drama because the story of this drama, it resembled to the actual story of the king's murder very much. And the differences, there were slight differences, तो छोटे मोटे differences उसकी story में और king के murder में जो थे, उनको हेमलेट ने क्या किया, he added few lines in the drama, added few lines in the script of the drama, so that when it was going to be performed in front of the king and queen, it would look exactly like the king's murder, the real story, the true story. So the plan was that as it will be staged, as it will be performed in front of the king and queen, Hamlet had planned to notice. He said that I will look at the faces of king and queen very carefully. I will observe their faces. I will observe if there is any change in their expressions. I will notice it, and that will give me the proof if they are really guilty, or if I have suspected them wrong. मतलब ये उसको पता चल जाएगा कि या तो वो वाकई में उन्होंने ये काम किया है, because he feels his mother is also involved in the plan of murder. So he said that इस तरह से उसको प्रूफ मिल जाएगा कि क्या वो वाकई उन्होंने किंग का मर्डर किया है या फिर वो उनको उनके ऊपर गलत शक कर रहा है. सो दैट वाज द प्लान, एंड ही asked Horatio, his best friend, also to observe the faces of king and queen, so that he just wanted the proof of the murder. All right. So this is okay, page 57, and we are doing line number 25 तक हमने ये कर लिया था, and we will start with line number 26 now. It was soon time for the play. Now there's one more thing, that he wanted the proof before he takes the revenge. One thing. Second thing is that it was never easy for him to kill anyone. ये उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. He did not like fighting and bloodshedding. ये सारी चीजें उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी. इस वजह से भी वो he was hesitating. It was not easy job for him to kill anyone. So that is why he was delaying it continuously. Anyways, now uh,
All right. So he was delaying it. Now he wanted to. Secondly, he said that if once he gets the proof, तो क्या होगा कि वो उसको रिवेंज लेने के लिए और भी ज्यादा इस बात के लिए उसको हौसला मिलेगा कि नहीं, whatever he is doing is right. So that is why he was doing it. All right. Line number 26. It was soon time for the play. It was soon time for the play. It means that the time had come for the play to start. Claudius and Gertrude. Claudius and Gertrude entered and sat down in front of the stage. So it means that Claudius and Gertrude, because Hamlet himself invited them to watch the play, that is why um, उन्होंने क्या किया कि वो एंटर हुए. They were happy at this because they thought that Hamlet was coming back to normal life and all that, and he's taking part in the activities of life. All right, Claudius and Gertrude entered and sat down in front of the stage. Hamlet and Horatio sat at one side where they could see the king and queen. Okay. Now the king and queen, they were sitting in front of the stage, right in front of the stage, and Claudius and Hamlet and Horatio, they were sitting at one side so that they could see the faces of king and queen clearly, and they could observe the change of expressions if there were any. The play started with Gonzago and his wife talking. Now this is the first scene of the play. पहला scene क्या है कि Gonzago and his wife, they are talking. Okay. And they are talking. She promised faithfully that she would never marry again if her husband died. Now, what is Gonzago's wife saying? Gonzago की wife क्या कह रही है इस scene में? वो ये कह रही है, she is promising her love for her husband. वो उससे ये promise कर रही है. Faithfully मतलब वफादारी का promise कर रही है. वो उसको ये बता रही है कि even if he dies, even if Gonzago dies, she will never marry again. वो दोबारा कभी शादी नहीं करेगी. It means that she loved him so much that even if he dies, she will not marry again. Only those women who have killed the first husband marry a second, she said. Now this was the line that Hamlet added in the play. ये वो लाइन थी जो हेमलेट ने प्ले में ऐड की थी, और वो क्या थी कि only those women who have killed the first husband marry a second. इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो विमेन, वो वाली खवातीन, वो वाली औरतें दोबारा शादी करती हैं, दूसरी शादी करती हैं जिन्होंने अपने पहले हस्बैंड का मर्डर किया होता है, जिन्होंने अपने पहले हस्बैंड को कत्ल किया होता है, सिर्फ वही दूसरी शादी करती हैं. She said. Hamlet saw his mother's face become pale. And Hamlet observed that at this dialogue, at this line of the play, हेमलेट ने ऑब्जर्व किया कि जब ये वाली लाइन बोली गई तो क्या हुआ कि उसकी जो मदर है उनका फेस एकदम से पीला पड़ गया, एकदम से she became very upset and she became very uneasy at this line. Okay, before the next scene, Hamlet explained to Claudius and his mother what would happen. Now, this first scene, it ended, finished, and then before the second scene started, Hamlet came in front and he explained Claudius and his mother that what would happen in the second scene. Okay. Now, in the second scene, he said, what will happen? You will see that a nobleman called Lucanus poisons Gonzago in order to get his lands for himself. The prince said. अब हेमलेट जो है वो स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है क्लॉडियस और गर्ट्रूड के सामने, क्वीन के सामने स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये तो फर्स्ट सीन हो गया. अब सेकंड सीन में क्या होने वाला है कि एक नोबल मैन, वन ऑफ वेरी एक इज्जतदार अच्छा आदमी, अमीर आदमी, उसका नाम क्या है? लुसेनस. लुसेनस उसका नाम है. एंड व्हाट डिड ही डू? ही गेव पॉइजन टू गोंजागो. उसने गोंजागो को पॉइजन कर दिया, उसे पॉइजन दे दिया इन ऑर्डर टू गेट हिज लैंड्स फॉर हिमसेल्फ. यानी लैंड्स मीन्स प्रॉपर्टी, जायदाद. यानी वो गोंजागो को पॉइजन दे देता है, कत्ल कर देता है ताकि वो उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके. Then we find out he loves Gonzago's wife. And secondly, और दूसरी reason क्या है? Why did Lucanus give poison to Gonzago? Two reasons. One reason, he wanted his lands, his property.
One thing. Second thing, he loved Gonzago's wife. So these were the two reasons for which Lucanus gave poison to Gonzago, and he killed Gonzago, so that after his death, he will get all the land, all the property of Gonzago, and he will marry Gonzago's wife. That is the reason of the murder. Now, this is what Hamlet is telling uh, to Claudius and the queen, that this will happen in the you will see this in the next scene, second scene. Claudius only watched a little of this scene, but Claudius, it what happened that the second scene started, and when the second scene started, Hamlet saw that Claudius did not see the whole scene. उसने पूरा scene देखा भी नहीं, और वो दरमियान में से ही उस scene का थोड़ा सा हिस्सा देख कर ही वो वहां से उठ के चला गया. He suddenly got up and rushed from the room. Rushed means तेजी से निकल जाना. तो क्या हुआ, अचानक वो खड़ा हुआ, उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया. Hamlet had his proof. Now this was the proof. ये वो proof था, ये वो सबूत था जो Hamlet को चाहिए था. He just wanted to make it sure whether the ghost story is right or wrong. That is why he was doing all this thing, play and all that. So जो वो चाहता था, जो proof वो चाहता था, वो उसको मिल गया था. There could be no more delay. So now there was no reason why should he delay the killing of the revenge of his father's murder. अब कोई वजह बाकी नहीं बची थी कि हेमलेट जो है वो अपना रिवेंज लेने में मजीद देर लगाता. As Hamlet discussed what had just happened with Horatio, a messenger told him that the queen wished to see him immediately. Now he was talking to Horatio about Claudius, how he responded, और ये वाली बात सारी अभी वो क्लॉडियस से डिस्कस कर ही रहा था, that a messenger, one of the servant, he came and he told Hamlet that the queen wanted to see him, talk to him immediately, now. So this was the okay. Now the next chapter starts the death of Polonius. Now who is Polonius? That trusted minister of Claudius. वो है Polonius है. The death of Polonius. Gertrude had decided to speak to her son alone to try to discover what was making him behave so strangely. अब क्वीन ने उसको क्यों बुलाया है? उसको इसलिए बुलाया है क्योंकि she wanted to know. Discover means find out. डिस्कवर का मतलब होता है मालूम करना. तो गर्ट्रूड ने उससे बात करने किस लिए उसको बुलाया था, क्योंकि वो अकेले में उससे बात करना चाहती थी, so that she could find out that why is Hamlet behaving so strange, why is his behavior so strange, why is he behaving so different, what is the reason. She wanted to know the reason, but Claudius was worried that Gertrude might discover the truth about the murder. लेकिन जैसे ही क्लॉडियस को ये वाली बात पता चली है कि गर्ट्रूड हैड कॉल्ड हेमलेट अलोन, तो ही बिकेम वरिड. उसे एकदम से वो परेशान हो गया. उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हेमलेट माइट टेल द होल ट्रूथ टू हिज मदर. ये भी तो हो सकता है कि वो सारा सच अपनी मदर को बता दे और गर्ट्रूड को सारी सच्चाई पता चल जाए मर्डर के बारे में. So he sent Polonius to find out what the son would say to his mother. That is why उसने क्या किया कि he sent Polonius. फौरन उसने Polonius को वहां भेजा, गर्ट्रूड के रूम में भेजा, so that he wanted to know. He wanted to know what Hamlet is going to say to his mother, and what the mother is going to say to her son. What are they talking about? To find this out, Claudius sent Polonius to her room. Gertrude thought Polonius had come to help her. Now, when Polonius comes to Queen's room, Gertrude thought that maybe Polonius had come to help her in finding out the reason of Hamlet's behavior. उसने कहा शायद ये मैं अभी हेमलेट के ऐसे बिहेवियर को मालूम करना चाहती हूँ, तो इसलिए ये शायद मेरी हेल्प करने के लिए आया है कि हम दोनों मिलकर उससे बात करेंगे, या इस तरह की कोई बात है. She did not know that Claudius had sent him. Okay. Hamlet knew he had to kill his uncle. Now this is one thing. Now this is for sure. There was no doubt about it anymore. He knew that now
There was no reason to delay the revenge. अब कोई वजह बाकी नहीं रही थी. He had already got his proof. उसे पता चल गया था. He was sure that his uncle had killed his father. अब उसे पता था कि अब उसने उसको, अब तो पक्की बात है ना, he is determined to kill Claudius. अब तो करना ही करना है. Claudius would certainly try to get rid of anyone who knew he had done, even if it meant that his new son had to die. Okay. And obviously, on the other hand, अब क्लॉडियस को भी जब उसने ये प्ले देखा है तो ऑब्वियसली नाउ ही इज ऑल्सो श्योर दैट हेमलेट नोज अबाउट द मर्डर. अब तो उसे पता चल गया कि ये जो प्ले करवाया जा रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है. बिकॉज ही वांट हेमलेट वांटेड टू शो हिम दैट ही नोज अबाउट द मर्डर. सो certainly means surely. Obviously, anyone who knows about the murder, Claudius will definitely try to make him out of the way. जाहिरी बात है, अगर क्लॉडियस को किसी पर भी शक होता है कि वो मर्डर के बारे में जानता है, तो वो चाहेगा कि उसको फौरन रास्ते से हटा दे, उसको मरवा दे या उसको कुछ भी इस तरह से करे. जिसको भी मर्डर के बारे में कुछ भी पता चला है, जिसको भी ये पता चला कि क्लॉडियस ने क्या किया है, तो वो उसको छोड़ेगा तो नहीं. इवन इफ इट मेंट that his new son had to die, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों नहीं हो, चाहे वो हेमलेट ही क्यों ना हो. अगर वो हेमलेट को भी असलियत सच्चाई पता चल जाती है तो क्लॉडियस के लिए अपने आप को बचाने के लिए ये जरूरी है कि वो हेमलेट को मरवा दे या खुद मार दे या जो भी. But even when Hamlet dreamed of spilling the king's blood, he could not help thinking about his mother. Now, this is one thing which was continuously upsetting Hamlet. Although the ghost also said that Hamlet should not harm his mother. एक बात थी, ghost ने भी कहा तुम्हें अपनी mother को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है. And he loved his mother obviously. But even then, spilling का मतलब होता है बहाना, खून बहाना. तो जब भी even he thought of killing the king, जब भी उसने क्लॉडियस को मारने के बारे में जब जब उसने सोचा, he could not keep his mother out of the plan. वो अपनी मदर का नाम उस रिवेंज में से नहीं निकाल सका. जब भी उसने किंग को कत्ल करने के बारे में सोचा, he could not stop thinking about his mother. उसको अपनी मदर का भी ख्याल आया because he thought that she was equally guilty of this murder. उसे लगा कि जितना कसूर क्लॉडियस का उतनी उसकी मदर का भी. He felt so angry and violent that he was afraid he might hurt her too. And obviously, now as he is sure that this death was not a natural death and it was a murder, now he was so angry and violent. Violent means he had become wildly, very, very angry. He could not control his feelings. And now he was so out of control that he thought that maybe he would harm his mother also. He could not stop himself. अपने आप को रोक ही नहीं सकता था. He could not help hating her for what she had done, but he tried to control his feelings. Now he started hating his mother. वो अपनी माँ से नफरत करने लग गया था because whatever she had done, because he thought that she was involved in the plan of murder. She and Claudius both killed the king and then she married Claudius. This was what Hamlet was thinking about. I will speak cruelly to her, but I will not use my sword, he said to himself. Now he is again making a promise to himself. दोबारा वो अपने आप से जैसे वादा कर रहा है कि okay, I cannot speak with my mother in the normal way a son should talk to his mother. ऐसे नहीं हो सकता. सका मैं उससे कोई प्यार मोहब्बत से बात तो नहीं कर सकता हूँ. I will speak cruelly. Cruelly का मतलब है बदतमीजी से, बेरहमी से. उसने कहा ठीक है, मैं उससे इस तरह बात तो करूंगा, ठीक है, but I will not use my sword. It means that he made a promise to himself that I will not kill her. This is what a promise that Hamlet had made to himself. उसने कहा ठीक है, मैं उसके साथ जैसे भी बात करता हूँ, बदतमीजी से करता हूँ, बेरहमी से करता हूँ, जिस तरह भी करता हूँ, but I will not kill her. He made a promise. On his way to Gertrude's room, Hamlet saw Claudius alone kneeling down to pray. Now he was going to Queen's room because the queen had called him
क्वीन ने उसको बुलाया था, अब वो जा रहा था अपनी मदर के रूम में. एज ही वॉज गोइंग देयर, रास्ते में क्या हुआ, एक रूम में उसने देखा, there was who was there? Claudius alone. There was no one else in the room. Claudius was alone in that room, kneeling down to pray. Kneeling का मतलब होता है घुटने के बल बैठना. नी मीन्स घुटना, नीलिंग डाउन टू प्रे, घुटनों के बल बैठना इबादत के लिए. यू मस्ट हैव सीन दैट द क्रिश्चियंस, हाउ डू दे प्रे? दे नील डाउन, वो घुटनों के बल जमीन पे बैठते हैं, एंड देन दे प्रे, जो भी दुआ मांगते हैं या जो भी इबादत वो करते हैं. तो क्लॉडियस उस रूम में बिल्कुल अकेला था, एंड ही वाज नीलिंग डाउन टू प्रे, घुटनों के बल बैठा था और अपनी इबादत कर रहा था या दुआ मांग रहा था. ही कुड हैव किल्ड हिम then without difficulty. It was very very easy at that time that Hamlet could have killed him very very easily without any difficulty. There was no one in the room. Claudius was alone, and Claudius was praying. He did not know Hamlet could have entered into the room without Claudius noticing him. क्लॉडियस को पता भी नहीं चलना था और हेमलेट ने एंटर हो जाना था, और कोई कमरे में था नहीं. बहुत ही आसानी से वो क्लॉडियस का मर्डर उस वक्त कर सकता था. देयर वर नो गार्ड्स नियर बाय. क्लॉडियस वुड नॉट सी हेमलेट अंटिल इट वाज टू लेट. और क्लॉडियस को पता भी नहीं चलना था. पता उस वक्त चलता उसको जब तक वो उसको उसके ऊपर अटैक कर चुका होता. Hamlet knew that he had to kill his uncle, and just then, at the terrible hour of midnight, he felt he could do it. Now, Hamlet knew, it means that now he was determined, now he was sure that he had to do it. He had made it sure, he had made it a plan, he had made it, uh, he was determined to do it. अपना उससे पक्का इरादा कर लिया था कि अब तो उसको ये करना ही है, क्लॉडियस को मर्डर करना है, रिवेंज लेना है. एंड नाउ एट दिस टेरेबल आवर ऑफ मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी तकरीबन, आधी रात का वक्त है और कोई आसपास नहीं है. And he felt that it was very very easy for him to do it at this moment. However, he also knew that if he killed Claudius while he was praying, that evil murderer would go straight to heaven. But there was one thing which was stopping him. मगर उसने ऐसा नहीं किया. क्यों नहीं किया? Because he thought it was a belief of, हम लोग भी जैसे सोचते हैं कि अगर कोई मर रहा होता है अल्लाह ताला से तौबा कर ले, जैसे हम कहते हैं कि वो नमाज पढ़ रहा था उसमें ही उसका इंतकाल हो गया, किसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो बहुत ही नेक आदमी है, वो तो सीधा जन्नत में जाएगा. बिल्कुल इस तरह से क्रिश्चियंस बिलीव that if someone is praying and while praying he dies, he is murdered or he dies, जो भी, चाहे नेचुरल डेथ मरे चाहे उसका कोई मर्डर करे, ड्यूरिंग प्रेइंग के दौरान में अगर होता है तो ही गोज स्ट्रेट टू हेवन. दिस इज व्हाट क्रिश्चियंस बिलीव. तो वो उसने भी, हेमलेट ने ये सोचा कि वो इस वक्त प्रे कर रहा है और अगर इस वक्त मैं उसका मर्डर कर देता हूँ, दैट इविल मर्डरर वुड गो स्ट्रेट टू हेवन. तो Claudius is not a good man. He is not a kind man. He is an evil murderer. He is a murderer. वो एक कातिल है. And evil, it means he is a wicked person. He was not a nice person. He was a wicked, एक मकार और शैतानी दिमाग का इंसान है, बुरा इंसान है. तो और कातिल भी है ऑब्वियसली. तो उसने कहा कि ही इज प्रेइंग, अगर इस वक्त मैं इसको कत्ल कर देता हूँ तो ही विल गो टू heaven and he will not get his punishment, obviously. Hamlet's own dear father was still suffering because he had died without being able to pray for forgiveness. अब ये वाली बात, everyone knew that the old king was a very nice and kind man. Everyone liked him very much. लेकिन उसके साथ क्या हुआ था? उसके साथ as the ghost told that he could not go to heaven directly. Even now he could not go to heaven because he died so quickly with the poison that he did not get time to ask for forgiveness. उसको माफी मांगने का और तौबा करने का वक्त नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो हेवन में अभी तक नहीं जा सका है, ये घोस्ट ने बताया था. So he said that my father, who was such a kind and nice person, he could not go to heaven because he did not get time to ask for forgiveness. तो इसको मैं कैसे डायरेक्टली हेवन में जाने दूं? ये नहीं होना चाहिए. नो, डिसाइडेड हेमलेट, देयर विल बी नो फॉरगिवनेस फॉर माय अंकल. नो, such a wicked and evil person should not get any forgiveness. उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए, उसे बिल्कुल भी तौबा करने का वक्त नहीं मिलना चाहिए.
ना ही उसे माफी मिलनी चाहिए. He should not go to heaven, obviously. I will kill him when he has just committed a sin. Committed means performed, कुछ करना. उसने कहा कि मैं इसको उस वक्त कत्ल करूंगा. I will murder him at that time when he had just committed a sin. जब उसने कोई, sin means गुनाह. सिन का मतलब है गुनाह, यानी कि जब उसने कोई गुनाह करेगा उस वक्त मैं इसको कत्ल करूंगा, सो दैट ही कुड नॉट गेट टाइम टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. तौबा करने का वक्त इसको ना मिले और ये हेवन में ना जा सके बल्कि हेल में जाए. then he will never get to heaven. And obviously this is what they believe, that if someone commits a sin, कोई ऐसा बुरा काम करता है, कोई गुनाह करता है, तो क्या होता है कि उस वक्त अगर वो मर जाता है तो वो कभी भी फिर हेवन में नहीं जा सकता. He puts away his sword and quietly left the room. उसने क्या किया, अपनी स्वॉर्ड को वापस रख दिया. And then he left the room, went out of the room very quietly. खामोशी से कमरे से निकल गया. When Hamlet came to his mother's room, Gertrude told Polonius to go and hide behind the curtain. Now Polonius and Gertrude, they were there in the room, and when Hamlet entered into the room, Gertrude told Polonius that he should hide. Hamlet should not come to know that Polonius is also there in the room. उसे पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसने Polonius से कहा कि आप जाकर कर्टन के पीछे छुप जाओ. Her son's behavior was by now so strange that she was quite afraid, and that was because Hamlet was behaving so strangely those days. बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से वो behave कर रहा था उन दिनों में. So she was so afraid. उसने कहा ये कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है. So that is why she thought that she should not Hamlet should not know that Polonius is also there in the room. After all this excitement, Hamlet could hardly stop himself from hurting his mother when he entered her room. Now this was after the play, and as after Hamlet had seen the expressions of Claudius and Gertrude were changing, they were becoming upset to see the play. ये तो Hamlet ने देख लिया. And now Hamlet was so angry, his feelings were so out of control that it was very difficult for him टू स्टॉप हिमसेल्फ. ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. और जब वो अपनी मदर के रूम में एंटर हुआ है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वरना उसका दिल ये चाह रहा था कि वो डायरेक्टली जाके अपनी मदर को हर्ट करे, नुकसान पहुंचाए, या उनको किसी तरह से अपनी स्वॉर्ड यूज करे, जो भी. When he saw her, he was overcome by anger. When he saw her face, जैसे ही उसको अपनी मदर का फेस नजर आया, a feeling of anger, गुस्से की एक फीलिंग उसके ऊपर बिल्कुल आ गई, छा गई. He became so angry. And all the terrible things that were happening now were her fault for not loving his father enough, because this was the thing. He thought that everything which is going on, all the bad things, ये सब कुछ बुरा जो हो रहा है, उस सब का जिम्मेदार कौन है? Queen. Hamlet thought that she was responsible for everything that was going on around. जो भी आसपास बुरे काम हो रहे हैं, बुरी चीजें हो रही हैं, उसकी जिंदगी में जो कुछ बुरा हुआ है, उस सब की जिम्मेदार उसकी मदर है. And why? Because he believed that she did not love his father. Because उसको लगता था कि वो उसके father को बिल्कुल, she did not love him. और that was the reason. अगर वो had she loved his father, अगर वो उसके फादर के साथ इन्वॉल्व होती, फेयर होती, फेथफुल होती, तो ये सब कुछ नहीं होता. So what do you want? He said rudely, बदतमीजी से. और एंटर होते ही उसने फौरन क्या कहा कि हाँ बताएं क्या बात है. बहुत बदतमीजी से पूछा, अपनी मदर से पूछा. उन्होंने उनको बुलाया था, हेमलेट को बुलाया था, तो उसने बहुत ही बदतमीजी से पूछा कि हाँ भाई क्या बात है, क्यों बुलाया आपने मुझे? Hamlet, I'm very unhappy with your behavior. You have shocked your father very much. So वो आगे से क्या कहती हैं, क्वीन कहती हैं कि Hamlet, I'm very disappointed at your behavior. उसका strange behavior, उसकी बदतमीजी की वजह से उसने कहा I don't like your behavior at all. बिल्कुल भी मुझे तुम्हारा ये behavior पसंद नहीं आया. You have shocked का मतलब है दुख पहुंचाना, सदमा पहुंचाना. तुमने अपने फादर को बहुत दुख पहुंचाया है.
No, mother dear, you have shocked my father very much, Hamlet said angrily. Because queen यहाँ पर father किसको कह रही है? क्लॉडियस को कह रही है. वो कह रही है कि तुमने अपने फादर को बहुत दुख पहुंचाया, यानी कि तुमने क्लॉडियस को बहुत दुख पहुंचाया. तो आगे से हेमलेट क्या कह रहे हैं कि नो मदर डियर, नहीं माय डियर मदर, यू हैव शॉक्ड माय फादर वेरी मच. हेमलेट सेड एंग्रीली, ही सेड दैट नो, इट वाज यू हु शॉक्ड, ये आप हैं जिन्होंने मेरे फादर को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है. एंड नाउ ही इज सेइंग, उसके वो किसको अपने फादर कहता है? द ओल्ड किंग. So he said that it's not me who has shocked the father. You are the one who has shocked my father very much. How could his mother speak to him as if Claudius was his father and her first husband had never existed? And again, he was feeling very angry and he said that वो तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे क्लॉडियस मेरे फादर हैं, और जैसे मेरे पहले जो मेरे एक्चुअल रियल जो फादर हैं और उनके फर्स्ट हस्बैंड जो है वो तो जैसे कभी थे ही नहीं. So he was so angry that he was feeling it, thinking it in such a way. Come, come, you are not answering me seriously, exclaimed Gertrude. Gertrude ने कहा कि ठहरो, तुम मेरे बातों का seriously जवाब नहीं दे रहे हो. You are not answering what I'm asking. Go, go, you are questioning me wickedly, cried Hamlet. Hamlet ने कहा कि जाएं जाएं, आप मुझसे बहुत ही चालाकी से सवाल पूछ रही हैं. Wickedly means चालाकी से, मक्कारी से. आप मुझसे बहुत मक्कारी से सवालात पूछ रही हैं. Cried Hamlet, that means shouted. He shouted. Why, Hamlet, have you forgotten who I am? Gertrude said she was terribly shocked. Gertrude ने कहा, क्वीन ने कहा कि हेमलेट, डू यू रिमेम्बर हु आई एम? तुम्हें याद है, तुम्हें पता भी है क्या, तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? बिकॉज उसको बहुत दुख पहुंचा था हेमलेट के इस बिहेवियर से, उसे इतना दुख पहुंचा था, उसने कहा कि तुम भूल गए हो, तुम किससे बात कर रहे हो, मैं कौन हूँ तुम्हारी? ऑफ कोर्स नॉट, यू आर द क्वीन, यू आर योर हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ. ही सेड नो नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको नहीं भूला हूँ, आप क्वीन है, यू आर द क्वीन, एंड यू आर योर हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, आप अपने हस्बैंड के भाई की बीवी हैं. अनफॉर्चुनेटली यू आर ऑल्सो माई मदर. अनफॉर्चुनेटली मीन्स बदकिस्मती से, बदकिस्मती से आप मेरी माँ भी हैं. ऑल्दो आई विश यू वर नॉट, हालांकि ऑल्दो मीन्स हालांकि, मुझे, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ नहीं होती, काश आप मेरी माँ नहीं होती. Gertrude had heard enough. She tried to leave the room, but Hamlet stopped her. Heard enough means it was really enough for her. She could not hear anymore. उससे और सुना नहीं जा रहा था. वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मजीद, इसलिए she wanted to leave the room. She got up, खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी. But Hamlet stopped her. But Hamlet got hold of her arm. उनका हाथ पकड़ा और उन्हें रोक लिया. He took hold of her wrist and forced her to sit down. It means that उन्होंने उनको रिस्ट, उनकी दोनों रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, रिस्ट जो है वो दोनों पकड़ी और उनको फोर्स्ड मींस जबरदस्ती, जबरदस्ती उसको वहां पर चेयर पर बिठा दिया. नाउ पुट अ डेट ओवर हियर बेटा. यहाँ तक हम आज स्टॉप करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इट टुमारो इंशाल्लाह. एंड